ओम श्री हरिनारायण कवचम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अंगन्यासः। ओम ओम नमः पादयो। ओम नम नमः जानुनो। ओम ओम नमः ऊर्वो। ओम नम नमः उदरे। ओम राम नमः हृदि। ओम यम नमः उरसि। ओम राम नमः मुखे। ओम यम नमः शिरसि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। करन्यासः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमः दक्षिणतर्जन्याम्। ओम नम नमः दक्षिणमध्यमायाम्। ओम ओम नमः दक्षिणानामिकायाम्। ओम भम नमः दक्षिणकनिष्ठकायाम्। ओम गम नमः वामकनिष्ठकायाम्। ओम वाम नमः वामानिकायाम्। ओम तें नमः वाममध्यमायाम्। ओम वाम नमः वामतर्जन्याम्। ओम सुम नमः दक्षिणाङ्गुष्ठोर्ध्वपर्वणि। ओम दें नमः दक्षिणाङ्गुष्ठाध्वपर्वणि। ओम वाम नमः वामाङ्गुष्ठोर्ध्वपर्वणि। ओम दें नमः वामाङ्गुष्ठाध्वपर्वणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु षडक्षरन्यास। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम ओम नमः हृदये। ओम विं नमः मूर्धनि। ओम शं नमः भ्रुवोर्मध्ये। ओम राम नमः शिखायाम्। ओम विं नमः नेत्रयो। ओम नम नमः सर्वसन्धिषुः। अथ दिगबन्धः। ओम महस्तराय फट् प्राच्यम्। ओम महस्तराय फट् अग्नेयाम्। ओम महस्तराय फट् दक्षिणायाम्। ओम महस्तराय फट् नैऋत्ये। ओम महस्तराय फट् प्रतीच्याम्। ओम महस्तराय फट् वायव्ये। ओम महस्तराय फट् उदीच्याम्। ओम महस्तराय फट् ऐशान्यम्। ओम महस्तराय फट् ऊर्ध्वायाम्। ओम महस्तराय फट् अधरायाम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। चश्मा कहाँ? नारायण कवचम्। राजोवाच येन गुप्तसहस्राक्षसवानरिसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्यं बुभुजे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्। यथा तथा हि नः शत्रून् येन गुप्तो जयन् मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्यं वरमाहं तदिहैकमनः शृणु। श्रीविश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्रौदन्मुखः। कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्दग्नेभ्य आगते। दैवभूतात्मकम् अभ्यो नारायणमयः पुमान्।
पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे रुद्यथो रसिः मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धुतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्ध्वनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखायां दशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलन्तं तु सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इत्यात्मानं परं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ओर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यत्ताङ्घ्रिपद्मपदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मातिगदेषु चापपाशाण्डदानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेश्वरव्याधिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूतपा विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतं च गर्भः रक्षत्सो मे ध्वनियज्ञकल्पस्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोऽग्रिकूटेष्वथ विप्रभाते स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात्रमादान्नारायणः पातु नरश्चासात् तत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गणेशात् कपिलश्च बन्धनात् सनत्कुमारो भवतु कामदेवाधया मां श्रीदेवहेलनाथ देवरशिवरयः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपश्चात् द्वन्द्वाद्भयादिशभो निश्चितात्मा यज्ञश्च लोकाधवताज्जनान्दाद्बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्याद् गोविन्द आसङ्गमवत्तवेणुः नारायणप्राह्णौदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणि देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईश प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दन दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः
चक्रं युगान्तानलतिग्मने निभ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्रिदन्दग्धरिदैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखोहुताशः गदेश निस्परसनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डिनिष्पिण्ड्यधितप्रयासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्राश्चूर्णय चूर्णयारेण त्वं यातु धानप्रमथः प्रेतमात्रपिशाच विप्लग्रहघोरदृष्टेन तरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरहृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चरमन् शतचन्द्रचादयद्विषामघोन हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो द्रुभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो हेभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्तकीर्तनात् प्रयान्तु सङ्ख्यं सद्यो येन श्रेयप्रतीपकाः गरुणो भगवांस्तोतस्तो भत्सन्दोमयप्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनानभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपज्ञानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वक्तु तत्सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाश उपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयम् भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिस्त्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः सा तु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा ऋक्षुरिक्षो धमनत्समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः मदवन्निधमाख्यातं वर्म नारायणात्मकम् विजयसञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावासं स्पृशेत् सद्यत्साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदत्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करहिषित इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयद्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रेभिर्वृतौ यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाक्षिराः सवालखिल्लवचनादस्थेन्यादाय विस्मितः प्राच्यं प्राच्यां सरस्वत्यां स्नात्पादामत्वमन्वगात्
य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चाद्रुतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। श्रीशुक उवाच एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपात् सतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं हृदे सुरान्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे नारायणपरमोपदेशो नामाष्टमोऽध्यायः।